अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त और मेरे वो स्टूडेंट्स जो चैनल को विज़िट करते हैं, वीडियोस को देख रहे हैं आजकल, वो सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर अली शहजाद। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। और हमारा ये टॉपिक बेसिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। और टॉपिक है हमारा मोलर मास, सिंपल वन, and the difference between molar mass and formula mass. So let's start with the definition of molar mass. Molar mass of a substance is its relative molecular mass or atomic mass. So molar mass is actually itself is molecular mass or atomic mass, but in grams. So if you have any confusion in molecular mass or atomic mass, you have to go through my previous videos, or I will also put the link of molecular mass and atomic mass in description box. Go and watch. Everything will be clear to you. So मोलर मास जो है एक्चुअली जो है वो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मासेस जो होते हैं उसी के थ्रू सम करके हमें मिलता है और हम उसको मोलर मास कहते हैं। बट ओनली थिंग विच इज चेंज इज molecular mass is expressed in AMU while molar mass is expressed in grams. Let's take an example. Molecular mass of carbon is 12 and molar mass of carbon is also 12. But the difference is, if we talk about molecular mass, we will use unit AMU. But if we talk about molar mass, we will go for gram. Let's take an example of ammonia having one nitrogen atom and three hydrogen atoms. So we know molar mass is obtained by adding atomic masses, but in grams, not AMU. So nitrogen is equal to 1 because of its quantity in formula. 1 multiplied by 14 grams is equal to 14 gram, and hydrogen 3 atoms multiplied by 1 gram, which is its atomic mass in gram, is equal to 3 grams, and total will be 17 gram, and it will be its molar mass, not molecular mass, because when something is expressed in grams, we will say its molar mass, not molecular mass. There is a note for students: molecular mass of ammonia will be 17, but with AMU unit. ये जस्ट डिस्कशन है आपके साथ, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे मोलर मास को। बाकी डेफिनेशन जो थी, एग्जांपल थे, वो क्लियर हो गया, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। मोलर मास एक्चुअली हम कंसिडर करते हैं ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम एटॉमिक मास जो AMU में हम कह रहे थे कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, और जब हम इसको ग्राम कह रहे हैं, मोलर मास से कंसिडर कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि जो ग्राम एटॉमिक मास है वो हम एटम्स और आइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं ओनली, और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम्स में हम मॉलिक्यूल्स के लिए और कंपाउंड्स के लिए, यू कैन से फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द मोलर मास एक्चुअली। So if we talk about element, so the molar mass of an element is its relative atomic mass, obviously, but in grams.
So the molar mass of oxygen, which is element, is equal to 16 grams, and 16 gram is its atomic mass. But if we talk about molar mass, then atomic mass will be expressed in grams, so the molar mass. The molar mass of helium element, 4 grams. After element, let's consider the example of compound or molecule. The molar mass of compound will be its molecular mass, but in grams. So molar mass of O2 means the molecule of oxygen, will be 32 grams. Why 32? Because oxygen atomic mass is 16 grams. Because of 2 multiplied by 16 will be 32 grams, and because of this 2 we call it molecule, not atom, not element, or you can say fairly atom. So the molar mass of H2O, which is a compound, will be 18 grams. Now the difference, just a little difference between molar mass and formula mass. Formula mass usually used for ionic compounds, fairly speaking, while molar mass is a generic term for the mass of 1 mole of anything. Now here only the doubt is mole. What is mole? Please go and watch my video on mole, then it will be clear for you. Formula mass is expressed in AMU, while molar mass is expressed in grams. This is a little difference, which is also expressed in your books, 9th class. Last one, very important one. While calculating atomic masses or molecular masses, there is no any such difference found. Means the method of calculation of their atomic masses, everything is same. The method is same, formula is same, but the difference is only AMU and grams. This is the difference. So I hope molar mass and difference between molar mass and formula mass is clear to you students. If any questions you want to ask, please ask in comment box. थैंक्स। आज टॉपिक के साथ साथ मैंने एक चीज़ और ऐड करने की कोशिश की है, इसको भी थोड़ा गौर कीजिएगा, देखिएगा कि एजुकेशन जो है डेहरकी, मीरपुर और घोट की, हमें तालीम को आम करना है। आई मीन टू से सिंध नीड्स नॉट ओनली एजुकेशन बट क्वालिटी एजुकेशन। तो जितने भी नौजवान हैं, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, टैलेंटेड हैं, जो कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, वो आगे आएँ, अपने आप को मनवाएं, टॉपिक सेलेक्ट करें जो स्टूडेंट्स के फ़ायदे में हो, यूट्यूब पर आएँ और तालीम को आम करें। इसी मकसद के लिए मैंने एक सेशन रखा है अपने चैनल पर। ये हमारे लेक्चरर हैं राजेश कुमार, मेरे कॉलेज टाइम के लेक्चरर हैं और बहुत ही टैलेंटेड और ज़बरदस्त लेक्चरर हैं। मैं पढ़ा हूँ इसलिए मुझे पता है। तो ये भी आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केमिस्ट्री पर। और मैं ये आपको सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा, अगर आपको एडवांस्ड होना है केमिस्ट्री में और एडवांस्ड केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर, इंटर, अपर लेवल, और कुछ सीखना चाहते हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनसे पर्सनली भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर कुछ आप नॉलेज चाहते हैं, नोट्स इनसे शेयर करना चाहते हैं, ही विल कोऑपरेट विद यू 10/10। ये हमारे मीरपुर के हैं, मीरपुर माथे लोग डिग्री कॉलेज के लेक्चरर। और
ये हमारे लेक्चरर हैं मोहम्मदीन राजड़ी, ये मेरे स्कूल ओल्डन डेज टीचर हैं। ही इज़ नाउ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, ही इज़ फ्रॉम ढेरकी। तो मैं ये सिंपल कहना चाहूँगा, कोई जो स्टूडेंट्स जिनको ग्रामर में कोई भी डाउट है और कुछ सीखना चाहते हैं ग्रामर में, इंग्लिश में कुछ आगे आना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में, फ्रिक्वेंटली स्पीकिंग में, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें, और आप इनके साथ भी पर्सनली कांटेक्ट में आ सकते हैं और इनसे नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मकसद है ये सिर्फ ये है कि सिंध नीड्स क्वालिटी एजुकेशन, और इसके लिए हम जैसे पढ़े लिखे तबके को आगे आना होगा ताकि हम तालीम को आम कर सकें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।